there's a lot of audience. So seeing heads in the front row makes people believe like you have a lot of viewers. Yeah. Great. Can I have a nice round of applause once? I think everyone's not settled yet. We'll do that again. You can keep your phones aside. The mic is proper, right? Okay, great. Okay, can I have a nice round of applause now? Awesome. So, how many people here for the first time? Okay, lovely. How many people ever doing an open mic for the first time? Okay, nice. Okay, lovely, great. So we have new people over here doing new pieces. So my humble request would be that every time an artist is coming on stage, you need to make them feel like a star. You need to keep clapping, you can hoot for them. They should just feel good about being here. So that even if they screw up, it's okay. 1. 2. For everyone doing it first time, be prepared to screw up. It's totally fine. Given that it's your first time, it's an open mic, you're allowed to screw up, try your material and all of that. So don't have too much jazz just because there's an H logo behind. Everyone over here at some point is very bad. I mean, this is not meant to be a sermon, I'm just saying. Okay. Awesome, awesome. So, okay, quick question. How many people are fine with jokes? How many people are fine with jokes on them? Gender? Race? Religion? Yes. Oh, religion had a lot of yes coming in. I need to be scared. Okay, how many millennials here? 1, 2, nice, lovely. How many Gen Zs? Oh, nice. No, I do this Gen Z millennial thing. Was anyone here the last time I had hosted? Yes, I can repeat the jokes. No, but the bigger point is I always do this Gen Z millennial thing because there's this once I was hosting and I was being really cool about being a millennial and cracking jokes and talking funny stuff about Gen Zs. After a while, I realized 2 people in the corner were smiling and laughing and all of that, and the other people were quiet. Like they were like, haha, yeah, fine, whatever. And then I did the survey only to realize those 2 were millennials and everyone else was a Gen Z. But this eye is not because of that, I'm just telling you. I met with an accident as a kid. Itna chul nahi tha mere mein. But anyway, quickly, can we check our phones? Have we put it on silent? Yeah? Possibly put it on flight mode. Because like this 1.5 hours, just be over here. It's the best thing we can do. We're fighting that much for our own time and attention. Yeah? Okay, are we comfortable with English? क्योंकि मेरा हिंदी बहुत बेकार है. I'm a South Indian who's lived in Thane, who cannot speak one language properly because बचपन से I've lived in Bombay only. So English is like decent. We can do with English. Great. Awesome. I don't think there are any other instructions that I need to give except for the fact that every time someone's on stage, you have to clap. They need to feel overwhelmed. And for the new performers, get on stage, take like 10 seconds of your time, breathe, look at everyone, and then start your performance. Cool? Do you know the basic rules of poetry? What do you do when you like some line? Nice. Can we all snap once? Awesome. In case of Hindi artists, you can do Wawa and all because they love it. I've seen that. And they have an amazing amount of superiority on stage, which is beautiful. I mean, or probably it's just me who's envying them. But okay, without wasting further time, okay, remember this, you have 4 minutes. After 4 minutes, the mic will go off because we are running a little short on time. When I say short on time, I mean no one can go overboard because there's a show at 5. So they've been like 4:40 को बंद कर सकते हो क्या? तो सबको chance मिलना चाहिए, सबका chance आना चाहिए. We have about 12 artists. Yeah? Can I have a nice round of applause once more? Awesome, awesome. So without any further delay, can we have our first artist? Can we start clapping? Vikrant. Can we have Vikrant? Ah, yes, sir. Hello.
एक्चुअली मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ हैबिटेट में, सो खुद को साबित करते करते रातें कटती है, कि खुद को साबित करते करते रातें कटती है, इस घर की चौखट यारो अब अदालत लगती है। कि खुद को साबित करते करते रातें कटती है, इस घर की चौखट यारो अब अदालत लगती है। और किस जुर्म की सज़ा काट रहे हो साहब, और किस जुर्म की सज़ा काट रहे हो साहब, थोड़ा और सह लो फिर आदत लगती है। नमस्कार, मैं विक्रांत अवार्ड और आपके सामने एक कविता पेश कर रहा हूँ। कर्ण ने एक बार पूछा श्री कृष्ण से कि केशव, तुम तो मेरी ज़िंदगी की दास्तां जानते थे ना। मैं वो हूँ जिसे जन्म से ही अपनी सगी माँ ने कलंक के डर से छोड़ दिया था। इस पर केशव जो कहते हैं, मैं जन्म से ही मौत से लड़ता हुआ पैदा हुआ, कि मैं जन्म से ही मौत से लड़ता हुआ पैदा हुआ, उस पल से ही उस मौत से एक जन्म का सौदा हुआ। कि छल कपट और जुल्म की हर बात मुझको ज्ञात थी, कि छल कपट और जुल्म की हर बात मुझको ज्ञात थी। क्या ही कहूँ अज्ञान को, वो लांघने की रात थी। बादल घने छाए हुए और चमचमाती बिजलियाँ, बादल घने छाए हुए और चमचमाती बिजलियाँ, यमुना नदी के पार थी सृष्टि की खामोशियाँ। वसुदेव की उस टोकरी से कैद से तो छूट गया कर्ण, वसुदेव के उस टोकरी से कैद से तो छूट गया। दामन बचाने धर्म का मैया का दामन छूट गया, दामन बचाने धर्म का मैया का दामन छूट गया। इस कविता के बाद एक्चुअली मैं मराठी पोएम्स बहुत करता हूँ और मराठी लैंग्वेज है मेरी माई बोली। एक कविता मैं मराठी में पेश करना चाहता हूँ। बेशक इकरार आहे तरीही तक्रार आहे, की बेशक इकरार आहे तरीही तक्रार आहे, तुझ्याशी मीपणाचा कोणता करार आहे। नजरअंदाज होत असतील माझ्या कैक जखमा, नजरअंदाज होत असतील माझ्या कैक जखमा, खामोश तू म्हणून तर हा खोल वारा आहे। तुकडे हजार झाले माझ्या खुळ्या मनाचे, तुकडे हजार झाले माझ्या खुळ्या मनाचे, तुझ्या सादगीला भलतीच धार आहे। तुला कमी कुणाची नव्हती कधीही कंबक्त, मलाच वाटले मी सिर्फ एक यार आहे। एहसान काय करतेस ऐकून दुःख माझे, एहसान काय करतेस ऐकून दुःख माझे, तुझीच मेहरबानी कबर तयार आहे। आता नकोस येऊ मागून वक्त माझा, आता तुझ्यानी माझ्या मध्ये दिवार आहे। नको ही जिंदगी, नको ही जिंदगी आणि नको सनम कुणीही, नको ही जिंदगी आणि नको सनम कुणीही, बर्बाद मौत ये तू माझा होकार आहे। एक आखरी खयाल आता उगाच छळतो, एक आखरी खयाल आता उगाच छळतो। इश्क युद्ध आहे की सिर्फ हार आहे, इश्क युद्ध आहे की सिर्फ हार आहे। धन्यवाद। Thank you so much, yaar. Buddy, how old are you? How old are you? 21. Wow, wow. Can we hear it again for him? I think it was refreshing to hear Marathi poetry, because the reason I say this is, you know this place called Thane? How many of you from Bombay here? Oh, nice. So Thane is that part of the city which is very far. It is Bombay but not called as Bombay, for those who don't know. So Bombay's oldest open mic, I mean second oldest open mic used to happen in Thane, and वहाँ पे बहुत सारे मराठी poets आते थे, and उनकी poetry बहुत ज़्यादा सुंदर थी. I don't know, somehow I've never seen Marathi poetry reach this side of the city unless it's directly a great play at NCPA or something happen at NMAC or something. But in these open mics I've not seen, so thanks for doing that, that's great. And isn't it commendable, someone at 21 doing this? Wow. Because my 21 was just fun with zero responsibility. Is it okay if I talk to you guys in a bit in between, know what you do and all of that? Yes. Are we all game for it? What brings you here, sir? Are you going to read? Yes. Oh, lovely. Have you been writing? I mean, for years? Almost 20 years now. Wow, this is so cool. Great. Since I spoke about this open mic called Poetry Tuesdays that used to happen in Thane, there was something very cute about this. Before I call the next person, I'll just share it with you guys.
over there used to be these 2-3 people. You know, specifically they'd come with a small diary. And every open mic, they'll be like, this is my 198th poem. This is my 199th poem. And they were so cute, those people. They used to have everything well handwritten. So I think that is the thing about people who've been writing for a very long time. Like handwritten poetry and handwritten letters have gone somewhere afar. Do you guys write letters? Lovely, that's great. I'll come back to that. Okay, Vimal is going out. I had to call him. Okay, great. So we'll have, Vimal is here. So before we go to the next artist, I'll just take a quick 2-minute because we have this amazing artist. His name is Vimal, and he has a small announcement for you guys. He's probably one of those poets in the least amount of time. He's really won a lot of accolades for his performances, and he's spellbinding. Can we have Vimal? Can we have a nice round of applause for him? बहुत शुक्रिया कृष्णा, बहुत शुक्रिया. मैं गज़लें नज़में ये सब लिखता हूँ. आदाब आदाब. तो मैं एक गज़ल आपको सुनाता हूँ, फिर मैं जो अनाउंसमेंट है वो कर दूँगा. बहुत छोटी सी गज़ल है और ये बहुत पुरानी गज़ल है, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है. और अगर हम शेर शुरू करने से पहले क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़े लिखे लोग मालूम पड़ते. सीढ़ी उतरते वक्त ये आया था ध्यान में, सीढ़ी उतरते वक्त ये आया था ध्यान में, जाने अब कौन आके बसे इस मकान में. सीढ़ी उतरते वक्त ये आया था ध्यान में, जाने अब कौन आके बसे इस मकान में. मेरे तुम्हारे बीच जो एक सब्ज पेड़ है, मेरे तुम्हारे बीच जो एक सब्ज पेड़ है, गिरती है उसकी छाँव कहीं आसमान में. कुछ लोग इस तरफ रहें, कुछ लोग उस तरफ, दरिया था मैं तो बहता रहा दरमियान में. और ये शेर सुनिए कि बच्चा था माँ के साथ वो जाता था काम पर, बच्चा था माँ के साथ वो जाता था काम पर, गुंचा था खिल रहा था एक उजड़े मकान में. और करते थे कोई बात. देखिए ऐसे इश्यूज मैं अक्सर उठाता रहता हूँ अपनी गज़लों में. और शेर ये सुनिए, आखिरी शेर इस गज़ल का, ध्यान दीजिए, गौर से सुनिए कि बच्चा था माँ के साथ वो जाता था काम पर, गुंचा तक खिल रहा था एक उजड़े मकान में. करते थे कोई बात दलितों के हाल पर, करते थे कोई बात दलितों के हाल पर, बैठे हुए शरीफ लोग रेस्तरान में. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत मोहब्बत. मैंने यहीं से सफ़र शुरू किया था और मैं वही कपकपाता हुआ लड़का था जिसने यहाँ पर आके बिल्कुल एंशियस भरे अंदाज में अपनी कविता पढ़ी थी आज से कुछ बरस पहले. और यहीं से मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, जानी. मैं काफ़ी लंबे समय से लिख रहा था पर परफॉर्म मैंने यहाँ से एक तरह से करना चाहिए मैंने शुरू किया. और आज ये है कि अगले वीक 29 जून को मैं इसी मंच से अपना सोलो शो कर रहा हूँ. तो मैं चाहूँगा अगर आप मेरा देखिए, मेरी प्रोफाइल देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ इसकी कविता सुननी चाहिए, इसकी कहानी सुननी चाहिए, तो एक मेरी जर्नी है, उसमें कुछ भी फिक्शन नहीं है, मेरी आप बीती है उसमें. और उसका नाम है बेटे ख्वाब देखो तुम, है ना, हमें ख्वाब देखना चाहिए. तो ये शो का नाम है. हैबिटेट की बायो में इसका लिंक है और मेरे बायो में जाएंगे, मेरा नाम विमल चित्रा है. अगर आप मेरे बायो में जाएंगे तो आपको इसकी लिंक मिलेगी. अगर आपको लगता है मेरी कविताएं आपसे जुड़ती है, आपको इंस्पायर करती है, तो प्लीज़ आइए मेरे शो में 29 जून शाम को 5 बजे इसी मंच से. बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं कृष्णा को फिर से बुलाना चाहूँगा. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. Imagine this guy is saying, मैं जब यहाँ आया था मेरा हाथ काँप रहा था. लग रहा है तुम्हें? कॉन्फिडेंस देख रहे हो? But that's also the beauty of the stage. Okay, amazing. How about we do this? I start with a story and then I call the next person up. Are we good? Okay, awesome. By the way, I don't think I've introduced myself. My name is Krishna Iyer, your host for the afternoon, obviously. So I've been storytelling and poetry since 2016 or something. Although as a kid, I've always been a stage speaker, public speaker. I guess attention is the problem. But yeah, so coming back to this story. As a kid, I lived a lot of stories in my life.
two primary reasons. One, extreme overconfidence. Two, I thought I could navigate through any situation, which is just the first and the second, the same thing. So this once I was in a friend's society and she was introducing me to all her other friends and I was like talking to everyone and I was like, hi, Krishna, na, 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 all that great. It was sounding very good. But then there was this one girl who was sitting across wherever we were and she was just quiet, very silent. And I was like, listen, who's she? And then she introduced me to that friend. Now, overconfidence has it the way it is. I just walk up to her and I'm like, cute dimple. You look very pretty. And she was like, thank you. And she didn't utter a word. Now, the problem with people who are extremely overconfident and love attention, if there is no reciprocation, it's like leaving them hungry. So I tried to build a conversation, all that happened. Fun fact or the important part to remember is I'm talking about when I was probably 14. At that time, as millennial kids, our spectrum was very small. You like a girl, you fall in love. There's no concept of crush and all. So I tell my friend, listen, who's she? And she tells me, no, yaar, Krishna, not this time, please. I'm like, no, honestly, I'm in love with her. I just need to know who's she. It's like, listen, 2 weeks ago you were in love. This is not a good idea. Moreover, she's 3 years older than you. She wouldn't even be interested in you. I was like, Arey yaar, baat to karana. Let's figure out where this goes. And of course, like I said, extreme overconfidence. So somehow, I get this girl's number. But then, again, we're talking about an era when messaging was very limited. 35 rupees, 350 SMS. You don't get more than that. So you need to be very calculative and very smart. So then I took out my phone. I wrote the first message saying, hi, I'm so-and-so. Remember, I am the boy who gave you a compliment. Tada, send. Let's call the next performer. Are you good? Okay, can we start clapping? Can we start clapping? For Jay. Hi. सो माय नेम इज़ जय और मैं 1 महीने से ओपन माइक परफॉर्म कर रहा हूँ. सो जैसे सर ने जहाँ पे एंड किया मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ. सो एक डेट पे उस पर पूरी स्टोरी और पोएम है कि कैसे डेट रही और क्या रहा. तो एक खूबसूरत लड़की से मैं 4-5 बार मिला और वो हर बार घर पहुँच के मुझसे सवाल करती. बहुत बेसिक सवाल करती कि मैंने कौन से रंग के कपड़े पहने थे, मेरे मोजड़ी का रंग क्या था, या फिर मेरी बिंदिया कैसी थी. तो ये सब के मैं सवाल देता रहा. और एक बार उसने पूछा, मतलब 3-4 डेट हो गई रहेगी, और एक ऐसी शाम में थे कि जहाँ पे थोड़ा ब्लैक था और उसने पूछा कि मेरे कानों में कैसे झुमके पहने थे. तो मैंने उसको डिस्क्राइब ऐसे किया है बाय पोएम कि उसके जो घर के झूमर होते हैं ना, बेसिक वैसे ही उसके झुमके थे कि वो झूमर से झुमके जो घर की शोभा बढ़ाते हैं, पर वो झुमके जो तुम्हारे कानों में लगे तो गुलाबी गाल और बालों के बीच से जो चांदनी झुमके थे उसकी जो चाबी, वो जादुई चाबी से लगे और सीधा मेरे दिल के दरवाजे को खोल गए. हर उसके सवाल पे मेरे जवाब बादशाह से लगे और हमारी रानी मेरी बनती चली गई. और फिर एक बार उसने पूछा कि मतलब कैसी मेरी आंखें कैसी है, कि आंखों के बारे में अब मुझे बताओ. तो आंखें उसकी नॉर्मल सी, मतलब ब्राउन, लाइट ब्राउन सी थी. तो उस पर मैंने एक छोटी कविता लिखी कि उसकी आंखें शहद के रंग सी और वो भी मिठास सी लगती. जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती तो नायाब से नायाब हीरे की चमक फीकी लगती. जब आंखें मिलाकर वो ठहर जाती तो पता नहीं कौन से जादू तो ना कर जाती. एक 6 फीट के इंसान को बिना कुछ किए अपना बना लेती. और हर कोई बात पर मेरी आंखों में देखकर सर हिलाती, ऐसे ऐसे करके. और मैं मान जाता, तुम्हारी आंखें मेरे शरीर का ही हिस्सा लगती, तुम्हारी आंखें मुझे बड़ी प्यारी लगती. सो एक ये डेट पे एक छोटी पोएम और स्टोरी टेलिंग थी. और एक मैंने अभी हाल ही में लिखी थी जब बारिश मुंबई में स्टार्ट हुई और मैं बस की लाइन में खड़ा था कि जब झुलसती गर्मी के बाद पहली बार फूलों पे बारिश हुई होगी तो वो क्या खिले होंगे. मतलब जो बेड थे गुलाब के फूल लेके तो एकदम अच्छे लग रहे थे. और जब बच्चों ने पहली बार बारिश महसूस की होगी तब वो अलग मुस्काए होंगे. मतलब वो खिलखिला उठे थे, स्कूल से बच्चे घर जा रहे थे तब.
और हम भी एक नए सूरज की राह में है जो हमारे सारे ख्वाब पूरे कर दे। एक ख्वाब के चक्कर में ना मुझे वो हवा महसूस हुई, ना ही वो बारिश की बूंदें मेरे पे गिरने की मुझे चाहत नज़र आई। मैं तो बस सूरज के इंतज़ार में वही लाइन में खड़ा रह गया। एक ख्याल तब ऐसा आ गया कि क्या वो ख्वाब मेरे ही थे ना, क्यों फिर उसने मुझे आज में जीने नहीं दिया, क्यों वो मुझे बूंदे मुझे महसूस नहीं करने दिए। क्या जो ख्वाब मैं देख रहा हूँ वो एक पल जब मुझे मिल जाएगा तो आज की कमी पूरी कर देगा। वो एक बड़ा सवाल मुझ पे आ गया। ये सारे सवालों के जवाब तो नहीं मिले, पर तब एक जवाब ये मिला कि मुझे आज में जीना ज़्यादा पसंद आया, मीन्स प्रेजेंट में जीना ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यार। कहाँ से हो आप? बोरीवली। लवली। कैन वी हैव अनदर नाइस राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इट? सही पढ़ा यार आपने, बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा था। सिर्फ एक छोटा सजेशन रहेगा, अगली बार और आराम से पढ़िए, आप टाइम लेके पढ़िए, आप बढ़िया पढ़ रहे थे। या अग्रीड? Also, I think I have a problem with you guys as the audience is that a lot of people I think want to appreciate but they're waiting for someone to snap and then they do it. Peaches, do bar I just did this and then everybody started. So if you like an artist, please do it for them. They would love it. Be it an open micer, be it a first timer, be it an experienced artist. I think what we all take from this stage is honestly the adoration that we get from the audience. Do you agree? Because everyone here, I think, is just a performer. No one's nice enough to just be audience. No, I'm just kidding. But, okay, yeah. So then I sent her a message saying that, I'm this guy, and hi. She replied back quite immediately. कहा था उसने ऐसे ही मैसेज करेगा. Which means my friend had already spoken to her. So she just replied saying, कहा था मैसेज ऐसे ही आएगा and these would be your words. Restlessness, childishness, everything together like, oh great, so you know it, so we should meet. Send. At this point you realize I'm not thinking anything, I'm faster than light. I don't know why. Because, I don't know. I liked her. So then, to which he replied, you like me, why should I meet you? And I was like, ooh, didn't see that coming. Because as an overconfident person or a kid with a lot of confidence and a lot of coolness in your head, you don't think too much about too many things. So she's like, why should I meet you? To which I replied, मिलोगे नहीं तो प्यार कैसे होगा? Realize कर रहे हो? There is so much Bollywood in my upbringing that the moment it's about love, भाषा ही हिंदी हो गई. So like मिलोगे नहीं तो प्यार कैसे होगा? अब सीन ऐसा हुआ, थोड़े टाइम के लिए उसका रिप्लाई नहीं आया. I was getting restless. So I decided, let's call the next artist. How does that sound? Okay, can we start clapping for Adarsh? Adarsh. Keep clapping. Let him come get on stage. Yeah. Make him nervous, overwhelm him. Hello everyone. Hello. I'm Adarsh and this is my first time on stage, on any stage. So just one request that please be gentle. So मुझे जैसा प्यार मिलता है, मैं अपनी कविताओं को अक्सर वैसे ही डाल देता हूँ. तो जब कॉलेज के गलियारों में मैंने उसने पहली बार मेरा नाम लिया तो मैंने कुछ यूँ लिखा कि खफा तो हम भी थे ज़माने से, राहें उलझी थी इस फसाने से, हर आहट हर साया बेसबब सा था, दिल भी रूठा था अपने ठिकाने से. गम का बोझ कुछ यूँ बढ़ा जाता था, जैसे हर लम्हा हर साया घिरा आता था, पर एक सबा आई दिल के कोई कोने से, जैसे जिंदा कर दे उसकी मोहब्बत के होने से. वो आवाज़ थी उसकी जो डूबते को किनारा दे गई, जैसे वीरा ज़मी को सितारा दे गई. फिर यूँ जागी एक चाहत की राग, हर लम्हा उसका
हर सांस उसका नाम। पर जब हमारी मुलाकातें बढ़ी, हमारी बातें बढ़ी, तो पता चला कि मैं कविताएं लिखता था और वो पोएम्स की दीवानी थी। मैं गालिब सा बनने की कोशिश करता था और वो रिचर्ड साइकन और होमर की दीवानी थी। सो इन दैट मोमेंट आई बिकेम अ पोएट। And here's what I wrote. Your eyes a shattered amphora of more wine than water. I, on my wax feet, stumbled onto the cliffs of Olympus. I saw your pupils dilate once, holy as an eclipse, and my heart knew Medusa's gaze and Aphrodite through my blood. This is how your eyes talk. This is how I know to write them. With all my ancient mythological love put on the altar of your eyes. So your eyes are Ariadne's thread, and I become your Theseus. So your eyes are the sea nymphs, and I am Icarus saved from drowning. So I want to be a Greek scholar and study every syllabic movement under the veils of your lashes. But your eyes steal my words. They steal my language until all left is Venus's hair wrapped around my brain, and I am Dionysus with an empty hand. Thank you everyone. What an amazing poet, dude. The transition from शायर to poet was just seamless. Like इधर मैं 10 साल से ट्राई कर रहा हूँ हिंदी में 2 लाइन लिख दूँ, जम नहीं रहा है. Just because she was a शायरा. But no, it didn't work only. But amazing, dude. You have an amazing voice. Like crazy. It didn't seem like the first time. I think people coming here saying first time are just scamming. They're like मैं बार low set करता हूँ तो कुछ ज़्यादा सोचेगा नहीं कोई. But no, crazy. You can we have it once more for him? You have like those proper podcast voices. एकदम सही से हाँ ऐसा एकदम deep voice, like she said, poise, because poet. And because I know English and my Hindi Urdu is bad, very bad. Became a shire for that. We'll get to that. But importantly, no, because I've always found it difficult to write very well in Hindi for the simple reason that Bombay Hindi. Adha is also Ardha for us because Marathi Hindi together. It's as simple as that. And there's no guilt or remorse for that either. But yeah, very well written, nice. Okay, so we were at, oh yeah, I had sent her a message and for a very long time she hadn't replied to me. So I was like, when you cannot get a reply, you do something that instigates a person. I didn't think this at that time. Now that I know the story, I can just say all these things. So I just replied to her, meet me thrice, and if you don't want to meet me the fourth time, I'll not meet you. I don't know where is this coming from, but I just said it because let's do it. And then she replied quickly, oh, is it? So much confidence. I was like, see, I like you is given. You don't. So what's there? Let's just try, no? What's the harm? And she was like, she didn't reply for a while. And then she replied, okay, let's see. So then I replied, I was like, let's increase the stakes. Because maza aa raha hai. So I replied, but if you want to meet me the fourth time, you'll have to give me a Cadbury. The fourth time. Now, for all those you kids who think Cadbury meant a chocolate, I don't know if you were from the school, state board and all of that, but do you know in school what did Cadbury mean? When kids reach 7th, 8th grade? Any guesses? No? Cadbury meant a peck on the cheek. Because that is the closest you can ever get to a girl at that age. Your brains don't work beyond that. So I was like, then you have to give me a Cadbury. And to which he replied, is it? We shall see. To which I replied, I hope you know what's a Cadbury. But then, we agreed to meet. But did she? She did. We agreed to meet. And then happened the first date. But we'll call for that after the next person comes in. How about that? Great. Can we start clapping?
Satyen. Can we have Satyen on stage? Woohoo! Nice. Am I audible? Okay. Today I want to have a discussion about the conversations I never had. Though I had a lot to say, but how could I really say? Because every time I opened up, you spoke louder. My words stayed unfinished. Yours took the stage. You always had a way with the words, and I knew that. And I had a way with the pauses. You called me deep, remember that? But you never really dived in, did you? I remember you cried openly, and everyone came running in. And I smiled quietly through mine, and they said, "Look how strong you are." Well, that's the story. I sat there listening, not just to your words, but to the entire space where I thought my words should have fit. Long pause, stillness. We were both hurting, but your pain became a conversation and mine just a background noise. A quiet corner, an unanswered text. That's what it became. Did you ever notice how many times I stayed silent just to keep the peace? You didn't. And you said, talk to me. Talk to me anytime you want to. But when I did, you looked away. When I did, you looked away. Or worse, you made it about you. And maybe I accept we were both broken, but only one of us was allowed to bleed. And maybe, notice this, maybe love is not about giving away always. Love is about who was seen less. Love is not about who gave more, but love is about who was seen less. Okay? And maybe, I believe, this is my perspective, maybe that's the saddest kind of love, where I love you enough to stay silent, and you love yourself enough to let me. I hope you acknowledge that, maybe. और एक पोइट्री लिखी थी मैंने 2 दिन पहले, वो मैं सुनाना चाहता हूँ कि तन्हाई में सिर्फ तुम थे और भीड़ में सारी दुनिया। तन्हाई में सिर्फ तुम थे और भीड़ में सारी दुनिया, पर तुम्हें वहाँ होना था उस भीड़ में, मैंने जाने दिया। तन्हाई में सिर्फ तुम थे और भीड़ में सारी दुनिया, पर तुम्हें वहाँ होना था उस भीड़ में, मैंने जाने दिया। तुम जिस शख्स की तलाश में मुझे छोड़कर गए थे, वो कोई शख्स था या सिर्फ एक एहसास, मुझे समझ में नहीं आया, फिर भी मैंने जाने दिया। तुम लौट कर आए फिर से, मगर तब तक देर हो चुकी थी। दिल ने बहुत कोशिश की तुमसे दोबारा रूबरू होने की, पर मैंने जाने दिया।
वक्त गुजरा, उम्र ढली, तलाश पर फिर भी वहीं रही। किसी मोड़ पर तुम टकराए फिर से, दिल को रोका बहुत, दिल ने आवाज लगा दी, होठ पर सिले रहे, मैंने जाने दिया। थैंक यू। Check. We're back? Okay, awesome. So, firstly, can we have another round of applause for him? The story and the voice both go hand in hand for the amount of poise and depth. It's great. It's lovely. We're so sorry we had to do that with Mike because of the time, because we're a little strict about it. So, but can we have another round of applause for him? Such a nice piece. You have an amazing voice, and the poise in your voice is great. I mean, I'm just stuck there because his story also had so much depth that you took a moment to look into your phone and see the words, and it was not a problem at all. Otherwise, you're usually like, "Arey, kya bolega?" But this is, we were totally with you. It's great, which is great. Okay. So I'll call up the next artist, and then we'll figure out what happened on the first date. It's also because time. So can we have a nice round of applause for Rahul? Yeah? Keep clapping, keep clapping. Hi everyone. I am performing after a very long time, so please bear with me if something goes wrong. This is the first time I am performing in English. I usually perform in Hindi, and I write about love and all, but this is the first time I have picked a different concept. So let's see how it goes. The title of the poem is Embracing Womanhood. She is a woman, she can't be strong. Mature enough to know, but why are we still thinking wrong? Housewife is a profession to which she belongs. Housewife is a profession to which she belongs. Everyone treats her badly, but still she gets along. We say there is equality. We say there is equality, but deep down we know that's not true. Deep down we know that's not true. You think you can play her role, but she can't play you. This had been taught, and that's how we grew. This had been taught, and that's how we grew. We can't even understand what they had been going through. In the times of need, she's ready to mold. In the times of need, she's ready to mold, updating with the trends, but why are thoughts still old? We think of her as a bronze. We think of her as a bronze, but deep down we all know she is gold. We think of her as a bronze, but deep down we all know she is gold. We call her fragile, but isn't she really bold? Sometimes better than us, but we have a tendency to underestimate. Sometimes better than us, but we have a tendency to underestimate. Even after their hard work, all the credit goes to their fate. They shower us with love, but we show them their hate. They shower us with love, but we give them the hate. We think of them as hurdles in our pathway. We think of them as hurdles in our pathway, but actually they are a golden gate. Instead of keeping them free, we keep them in a cage. Instead of keeping them free, we keep them in a cage. A wonderful wife, an outstanding friend, a marvelous daughter, an adorable sister, a nurturing mother. Isn't she a complete package? We all are humans. We all are humans, but do we actually treat them the same? We all are humans, but do we actually treat them the same? Equality exists, but only for the sake of name. But if we welcome her with open arms, she can take over the world with her enchanting charms. Just for once, if we let our pride take a drift. Just for once, if we let our pride take a drift, soon we will realize they are nature's true gift. Let's gather together because we have differences to embrace. Let's gather together because we have differences to embrace. As soon as everything falls into place, we will witness very beautiful days. That's my time, guys. Thank you. Nice. Can we hear it again for him?
it's crazy how poets are always like, I write about love and other things. Love is just like, hey, वैसे. मतलब I think one big difference I see in stand-up comics and poets is that poets are always sorry for whatever they're doing. There's no reason for it. Like, यार sorry मैं प्यार पे लिखता हूँ. आज मैं हिंदी के बदले इंग्लिश कर रहा हूँ, सुन लो यार. It's like that. But great, good work, dude. And I think I'm very happy about today's set of performers because there is a good mix of English and Hindi. पिछले ऐसे एक दो बार हुआ है जब मैं आया हूँ और मैं यहाँ पे इंग्लिश में बात करते जा रहा हूँ, एंड एवरी आर्टिस्ट कमिंग अप इज अ हिंदी आर्टिस्ट, एंड इट्स लाइक एम आई अ मिसफिट और आर दे लाइकिंग मी और आर दे जस्ट लाइक, यार एक होस्ट किया था एक बंदे में, इंग्लिश में बात करता गया, करता ही रहा वो. बिकॉज इट्स सो हैपेंड वंस दैट आई परफॉर्म्ड इन दिस वन प्लेस एंड after the entire performance, audience में से 2 men walked up to me and they came and they were like, सर आपने जो भी पढ़ा ना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था आपने जो पढ़ा, थोड़ा हिंदी में होता ना मज़ा आ जाता. एंड आई एम लाइक, सर आपको क्या समझा. बट ऑल्सो द अदर थिंग इज अबाउट हिंदी आर्टिस्ट, एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ पोएम देयर इज समथिंग अमेजिंग लाइक इरशाद. इंग्लिश के लिए कुछ नहीं है यार. आई मीन आई वॉन्ट टू coin a term for Irshad in English. Any suggestions? Come on. Okay. Any other suggestion? Irshad के बदले. Ijazat hai is as English as it could get. Now the thing with words like come on, go for it. All these sound like condom ads, dude. Irshad sounds so nice. Ever thought about it? Irshad is like, okay, बहुत आशा है, आगे क्या आएगा. Urdu gift to Hindi. Yeah, I'm just looking for something for English. So I think it literally translates to I'm all ears, or we are all ears. Oh, Irshad. Irshad means I am attentive, so we are all ears. we're all ears. That is something. Otherwise, because even the last open mic, I put this out to everyone and they were like, come on, go for it. And इरशाद में जो सादगी है, come on and go for it, मैं उतना ही सिर्फ हवस है. Sorry. But we're all ears. We're all ears. Can we hear it for him, guys? Coming from Satyan, a man of experience and that voice and the depth. Yeah, because it's crazy. Great. Okay, so we meet for the first time eventually. We're back. We meet for the first time outside her college. It's a walk date. Now, given the amount of stories I've lived in my life, and you can see how talkative I am as a person, I kept talking. I told her everything about myself. We met for 2 hours. I would have spoken for 2 hours and 10 minutes. And eventually, at the end of the entire conversation, she just had to say that, I love how you love yourself. And me being the person I am, I was like, don't worry, you love me too. That was how the first meet was. It was just all about myself. Then we managed the second meet. That did happen. Honestly, I didn't expect it to go beyond the first meet. I was like, pehli baar milegi, and she'd be like, enough. But then we met for the second time. But this time, I was a listener, guys. I asked her about herself. Out of 2 hours, I just spoke for 95 minutes. Rest was all her time. I got to know she loves reading. She likes flowers. Sunflower is one of her favorite flower. She likes Ruskin Bond. She really likes the color purple. She started telling me about these things. As a kid, she used to be a writer at some point. I started digging into that. Because back then I was not a writer or anything. But I just loved people who used to write and who used to have a way of articulating their thoughts. I think that was the most powerful thing to do. The second meeting was beautiful. Because I was a listener, like I said. I let her talk. Of course, I had my own stories. But then we spoke. We got to know about each other. Then happened the third meet. But let's have a performer first come up and give us a poem or something, whatever they want to perform. Then we'll come to the third meet. It's fun, don't worry. It's fun and games. Great. So can we start clapping? Can we start clapping for Pooja?
Pooja. Sorry, Richa. Sorry guys, Richa, and also you have to tell us what is the in bracket yellow bees. Oh yeah, Hi guys, Yellow Bees is my Instagram page. So yeah. Yeah, in bracket aka the Yellow Bees. Okay, क्या माहौल बांधा है यार. Let's have a cheer for Krishna. Okay. So today I have written something about a new definition of beauty for women. The only thing is कि आज इस रूम में थोड़ी gender diversity अच्छी नहीं है, but still I think you all will be able to get me, because honestly this is like from a man's perspective. So yeah, let's go ahead with it. Thanks to Satyen ji. Let's imagine this, okay? It's raining in Bombay. Not the stormy kind, but the soft, romantic sort that will, gently tap on the rooftops and fill the air with the smell of mitti. It's a lazy Sunday afternoon. The streets are quieter than usual, and you're sitting at small chai tapri tucked away in a sleepy by lane of Bandra, sipping hot chai in a kulhad with your love. Sitting across from you, he smiles and asks you in mischief, तुम्हें पता है तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत कब दिखती हो? And I nod and he says, इरशाद कहिएगा. जब तेरी आँखों में चमकती हो सपनों की गर्मी, पर लफ्ज़ों में हो जज्बातों की नरमी, जब सोच लेती हो अपने दम पर कुछ कर दिखाओगी, ज़माने के तानों को तिरछी आँख देख पाओगी, ये वो ऐसा वैसा बोलने वालों से अपना दिल नहीं तोड़ोगी, आसमान में उड़कर हवाओं से इश्क करोगी. जब कहती हो एक दिन ज़रूर मेरा घर होगा और उस घर का हर कोना सुकून होगा, जब तुम मोहब्बत से मोहब्बत करती हो और इश्क में पहले एहतराम करती हो, किस्मत से ज़्यादा जब तुम मेहनत से प्यार करती हो, क्योंकि तुम डर से डरती नहीं हिम्मत रखती हो, जब तुम ये समझ लो कि मिल जाए तो शुक्र और ना मिले तो सब्र, दुनिया चाहे जितने करे सितम रुकोगी नहीं, क्योंकि तुम में है जतन. तू चांद है मेरी जान, तू चांद है, तुझे दाग का क्या डर, तू चांद है तुझे दाग का क्या डर, तेरी चांदी तो है तेरा हुनर. तू है हया भी और हिम्मत भी, तेरी जिद ही तो तेरी इबादत भी. तुझे सजने संवरने की क्या ज़रूरत, तेरे सपने हैं आँखों का काजल, तेरी जिद है तेरी लाली, तेरा हौसला है तेरी वाली. सोचो अगर तूने हंसना छोड़ दिया, बहारों से अपना मुंह मोड़ लिया, क्या रहेगी दुनिया में ये हंसी वादियाँ. तेरे इशारों पर तो खुदा खुद भी झुक जाए, तू कह कर तो देख सारा आसमान तेरा हो जाए मेरी जान, सारा आसमान तेरा हो जाए. Thank you so much, guys. My God, you're a mesmerizing performer, and what confidence. Can we hear it again for her? Also, I had this observation that there are some words that just do not feel great in English.
like mitti, धूप. English. Exactly, English doesn't give that feel, and I think this is also a boon of the diversity that we have in Bombay, wherein कुछ चीज़ें हिंदी में बहुत मज़ा आता है. Like even how I told her कि प्यार कैसे होगा. Like love is not as great as प्यार. It's just crazy. But nice, lovely performance, yeah. Great confidence. Where are you from? Where in Bombay? Kandivali. Okay, lovely. Awesome. Nice. So we meet for the third time. Eventually. But the third meeting is not going to be a walk date and something simple or so. So what we decide is we will meet in, this station called Mulund in Bombay? Is the last station on the central side. After that, Thane comes. Mulund के बाद थाने आता है. हाँ जी. So we decide to meet in Mulund's world best ice cream parlor. Because the boy is in 8th standard, the woman is in the 11th standard. How much money would you have? And we were not Gen Zs. Anyway, so we decide to meet in Mulund's world best ice cream parlor, which had an amazing name called Prabhu's Ice Cream. God was right there for me. My God. Sorry. So then we choose to meet over there. So as soon as we enter in, she orders for a milkshake, and I choose to go for an ice slush. Why? I don't know, because it just seemed fascinating. बहुत सारा ice crush करके उसमें कुछ डाल के देगा और वो बहुत बढ़िया रहेगा. And we sat across each other. And on that day, at least for the first 10 minutes, I did not speak anything. Looking at me being silent, she asked me, "Won't you talk today? Why are you quiet?" To which I looked at her and I replied, "Today I don't think I'm going to talk too much. I want to sit here and observe this moment. This is probably the last time I'm going to be with you. I might not see you ever again. You might choose to be with any other man. And I'm sure he'll be very lucky if it's not me. Because you have chosen him. So probably I want to spend today just looking at you, looking at your smile, that dimple, because that's going to stay with me for a very long time, even if you leave." And then we both sat silent over there. Because I shot all the lines I had at once. Language didn't teach me more. And she was like, "बात तो अच्छी कर रहा है, but I can't just give up yet." So for the next 10 minutes, she was chewing her straw, and I was sipping on the slush, making noises, and not sure of how is this going to go. Because after this point, the moment of decision arrives, and there's a lot of nervousness within. And I don't know how to hide any emotion. Leave apart love and all, nervousness bhi. I'm tapping my feet constantly. I'm having this slush. वो चल रहा है. Then we decide to get up. We get up, we pay the bill, and then we walk out. How about I call the next artist? Your third story is so interesting. Third meeting, I have a strong urge of writing poetry on it. Nice. It's almost like emotional also for the first one. It is emotional. What is this? It is also emotional. You don't seem dumb only. You are not all that frivolous. It was intense emotion. I wanted to be with that girl. Because as 8th standard, know how much intensity would I have? Matlab, you like Ruskin Bond, I like Dairy Milk, I like Sonu Nigam, I like Shan. What do you like? I like Atif Aslam. Oh, you have depth. That is the closest we can get to. 8वीं का लड़का 11वीं की लड़की. And no internet exposure as much as today. I'm not saying we didn't talk. My God, I feel ancient. Anyway. Yeah? How many above 30? 30, exactly. Nice. Very nice. I like these people. These people are really still figuring out their life.
The ones between 30 to 35 specifically. Because we are that part of millennials जिसने एक पैर boomers के साथ बिताया है, दूसरा पैर जेनजी के साथ बिता रहा है, अभी जन अल्फा को देख रहे हैं और सभी फकौल लगते हैं उनको. Because we don't know what to make as a choice. The boomers that we saw, they did decently well in life. The Gen Zs that we are looking at, they're doing anything they want in life. Yeah, exactly. And we are still reluctant kids. कोई तो परमिशन दे दो. किस चीज़ का परमिशन किससे चाहिए पता ही नहीं है हमें. We're 30, 32, but we still want permission yet. Because we were taught to go to tuition classes. Oh, I got it. Anyway, okay. Let's call the next artist, and I don't remember this person's name, so I'm going to look it up and come back. Sorry. Can we start clapping? Yeah? Can we have Smith on stage? Nice. हाय गाइस, मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे. वैसे तो तीसरी बार है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही लाइन पे आती है. तो ऐसे मेरे को पता नहीं शायरी कैसे चालू करते हैं, लेकिन मैंने एक लिखा हुआ था. थैंक यू. मैंने एक लिखा हुआ था कि एक ख्वाब है जो मैंने तुम्हारे लिए सजाया है. एक ख्वाब है जो मैंने तुम्हारे लिए सजाया है. एक ख्वाब है जो मैंने चांद सितारों के महफिलों में सजाया है. और याद है उस टिमटिमाना उन तारों का, वो वैसा एक ख्वाब है जो मैंने तुम्हारे लिए सजाया है. एक ख्वाब है जो मैंने तुम्हारे लिए सजाया है. ये ख्वाब जो है वो उस दिन तारे टिमटिमा रहे नहीं थे, बतिया रहे थे चांद और बादल से. उस दिन वो तारे टिमटिमा रहे नहीं थे, बतिया रहे थे चांद और बादल से. फिर ना जाने क्यों सुबह होते ही बादलों में भी गुलाबी सा रंग आया है. एक ख्वाब है जो मैंने तुम्हारे लिए सजाया है. एक ख्वाब है जो बादलों में भी गुलाबी रंग लाया है. ऐसा ही ख्वाब है ऐसा ही ख्वाब है, एक दिन नहीं कई दिनों तक सजाया है. वो ख्वाब जो है एक दिन नहीं कई दिनों तक सजाया है. फिर ना जाने क्यों कोई सितारों से भरी मखमली चादर ओढ़कर अपना ही ख्वाब सजा रहा है. एक ख्वाब है जो मैंने तुम्हारे लिए सजाया है. एक ख्वाब है जो बादलों में गुलाबी रंग लाया है. थैंक यू गाइस. एक ख्वाब है ना, वो जो ख्वाब है, अभी कोई सुबह पहाड़ों के सहारे झाँक रहा है किसी को. अब सुबह होते ही पहाड़ों के सहारे कोई झाँक रहा है किसी को. लगता है मेरे से भी पहले मेरा ख्वाब चांद ने सूरज को बताया है. एक ख्वाब है जो मैंने तुम्हारे लिए सजाया है. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. वी हैव टाइम? ओके, तो जल्दी से एक और कर लेते हैं, ठीक है. तुम कलम बनो मैं तुम्हारा कागज़ बनूं. तुम कलम बनो मैं तुम्हारा कागज़ बनूं. तुम बनो बारिश तो मैं गीली मिट्टी बनूं. और तुम बनो भाप मेरे मैं तुम्हारा बादल बनूं. तुम बनो भाप मेरे मैं तुम्हारा बादल बनूं. और छुपा लो तुम्हें पॉजेसिव होके मैं. तुम एक बार तो मेरे चांद बनो. थैंक यू गाइस, दैट माय टाइम. माय नेम इज स्मिथ. ग्रेट ऑडियंस. थैंक यू फॉर लिसनिंग. And you're an adorable performer. Can we hear it again for him? Yaman, you have a very innocent and lovely smile. And you write well as well, honestly. बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. फर्स्ट टाइम था भी नहीं. पोइट्री में फर्स्ट टाइम था आपका. डैम, पीपल हु कैन डू स्टैंड अप क्रेजी. बहुत गट्स है. मेरे जैसे लोग स्टोरी टेलिंग में थोड़ा जोक डाल के बोलते हैं मैं फनी भी हूँ. But anyway, before we move ahead, we have a small announcement, and I have a very dear friend to come on stage. Can we have you, Harsh? Thank you so much. Just want to do a small piece and then I'll get to it. How many of you have friends? Give me a cheer. I know it's a very lovely. Good to know. Good to know all of you have friends. How many of you have close friends? Give me a cheer. Yes. Lovely. I know it's a very obvious question. Don't believe your friends, okay?
I went to this place called Gokarna. I don't know if you guys know. I'm not from Bombay. I'm from Bangalore. There's a place called Gokarna, which is very close to Bangalore. It's a place where you see a little bit of hills, a lot of beach. Great place. So I went there with my bestest friend. Okay, I've known him for like 15 years now. I went there. It was a great experience. Here's the thing. I am really scared of water. Okay, I don't know how many of you are scared of water. Give me a cheer. Give me a cheer. Not like nahane ke time water. I'm saying like open sea, like ocean. You're like, oh shit, ocean is too much, right? Even pool, because I'm 6 feet, I walk in pool, right? So I'm not that scared. But in open sea, I'm very scared. So we had gone on a trip, and then at one point we had to take a boat from one island to the other island because there's no other way to go. So I was like, okay, let's figure this out. So we took that boat, we went to that island, we had fun. We were all coming back. We stopped at one path where you could see the island at some distance and you could see the sea everywhere, okay? And I'm like standing and looking over the water and I'm freaking out, okay? I'm freaking out. I'm like, shit, kaise karu main? Kya hai? Ye pani bahut zyada hai. Like, can we just get back to the shore? Can I be near a sand, land, everything? And he's talking to me, he's behind me, he's talking to me. We're looking at the water, he's like, water looks scary. I was like, yeah, water looks scary, right? And then he pushes me into the water, okay? I forgot to tell you one thing. We had worn life jackets. ऐसा नहीं था कि वो कुछ murder plan कर रहा था. He just pushed me. He just pushed me and said, go deal with the water. Okay, I freaked out. Okay, now I'm in the water. He's in the boat still. He's laughing at me. Okay, I'm like, dude, I'm scared of water. He's like, he's asking, Bhaiya, kitna deep hai ye? Bhaiya is like 100 feet. I was like, why are you doing this right now? I can hear you guys. Can I can you leave it? He's like, yeah, I'll fine, leave it. Okay, fine. And by this point, I've left the boat and I'm floating in the water and I'm now floating towards horizon. I was like, hey, look, can you save me? And they're like, yeah, we'll come in 2 minutes. I was like, dude, like, what are you trying to say? Eventually, he also came to the water. He stayed there with me. He held my hand. He's like, how does it feel? I'm like, you're stupid, bro. Like, fucking leave me. I think we need to like consider our friendship right now. He's like, take it in. Okay. He held my hand, held me, and he's like, take it in. It's okay. I'm right here. You have a life jacket. The water's right here. The boat's right here. If anything happens, we'll all come and save you. Okay. And then for 2 minutes, I felt peaceful. And I felt relaxed. And I felt calm. And for the first time in my life, I'm 31 right now. For the first time in my life, I felt relaxed around open water. Okay. Then we came on the boat. We left for home. And on the way, at some point, he's like, did you have fun? And I had to get really angry and annoyed that I agreed that it was really fun. So the whole point of telling you this is that don't believe them. But trust your friends. Don't just believe them. Trust them because I feel like they're looking out for you. Okay? And in a moment like this where you feel uncomfortable or you feel like I can't do this anymore, just do it. Because you're with them, they'll safe. Yeah, you're safe, they'll protect you, so on and so forth, okay? So that was the story, okay? Thank you so much for listening. That brings me to my next point. I'm hosting a workshop, okay? A workshop on how to narrate real-life stories to stage. And this was a absolutely real-life story that I performed. This is happening on the 13th of July at Mukti Manch. There's this venue called Mukti Manch in Warsaw. It's happening there. Tickets are in my link in the bio, or there is this community that I'm doing it with. It's called Irshad Community. It's called irshad.community. That's their page. I'm performing with them. I mean, I'm hosting the workshop with them. So if you guys want to know how to bring your real life on stage, please do sign up for it. All the details are on Instagram. That was one part of it. Second part of it, like you guys are performing poetry and storytelling, I've been working and performing for the last 8 years. I just felt like we needed a space where we could get more poets and storytellers to perform for longer periods of time. Like you guys know, 4 minutes is the slot for open mics. So we've started this property with Habitat called Creative Block Party. How many of you have heard of it? Any of some? Lovely. Thank you so much. So we've started this property called Creative Block Party. The whole idea is that we have experimental shows with poets and storytellers and musicians that come together to do curated shows every Wednesday at this very venue. So this coming Wednesday, we've had 3 shows this month. This coming Wednesday, we are having a show of poetry lineup. We're going to have different poets coming in and performing for a little longer than otherwise. These are all curated shows. If you guys want to perform with Creative Block Party, there will be a Google form that will be put out. Just follow the page. And follow the page otherwise so that you can come for the show. And if you can't come for this show, which is completely okay, we have shows every Wednesday, come for any show. And if you see a poster, I would urge you to just share it because I feel like that works on Instagram. It helps us reach somewhere. So I would really urge you to share that and come for that show also. Otherwise, thank you so much for listening to me. Can we please have a round of applause for Krishna? Wow. Can we hear it for him again, guys? So, Harsh is a dear friend. We are one of the oldest who have been in the scene for a very good
time, and he's an amazing storyteller, guys. You've witnessed a glimpse of it, but even otherwise, you must go for his show. I urge you, because for the simple reason that I've heard him, I've heard a lot of his pieces. An amazing storyteller, and his journey to stage is something that's very interesting. Like how Vimal came up on stage and said that initially he was all shivering and all of that, and now he seemed so confident. Similarly, Harsh has an amazing journey to stage, which I think every one of you who wants to be a performer should listen to. So yeah, Creative Block Party, another amazing place. Like after a very long hiatus, I got that stage about 2 years ago. It was amazing, and the artists you see over there are mind blowing, because they come out with their raw, unfinished pieces or some experimental pieces, which is a lot of fun. Harsh, I want a spot. Anyway, okay. So we pay the bill. And then we step out of the ice cream parlor. And now we have to look for a rickshaw for her because she has to leave. So we go to the rickshaw stand. The opposite side is the rickshaw stand over there. And we go to the rickshaw stand. There are no rickshaws over there. So I'm looking at her. She's looking out for a rickshaw. And I'm just too busy gazing her and adoring her, how beautiful she looks, trying to fight for a rickshaw or call for a rickshaw and all of that. So then after that, I'm looking on the other side to look for a rickshaw. And after a few moments, I just turn around to her, and then she's like, I'll figure a rickshaw anyway, bye-bye. Aise karke, she comes closer to me and she gives me a hug. Now, this has not happened the first 2 times. So I don't know where this is going. And as I was busy in this hug, just while parting, she gave me a Cadbury, she sat in the rickshaw and she left. Quite literally, that's what happened. And then we dated each other for about 6 months, because then we both grew up. She realized there are more fishes in the sea, and I was like, board exam is a thing. We need to know. But yeah, that was my story, guys. So it was a nice time. She was a very sweet person. And we dated each other for 6 months, and this is a real life story. So this is how I do real life stories, but the evening is not about me. If time permits, I have another piece for you. It's a poem, not a story. I'll do that. But are we ready to call the next act? The next person's name is क्या बोलते हैं? Lavish. Okay, so let me explain. For people in Bombay, अल्कोहल को दारू बुला लेते हैं. ये नॉर्थ या दिल्ली वाले लोग रहते हैं शराब बोलते हैं. शराब. There's so much to it. It's like if someone's offering me शराब, it has to be expensive. मैं देसी को शराब बोल के नहीं पी सकता. Similarly, एक होता है अमीर. वो लोग होते हैं रईस. You understand this? This never comes in, at least हिंदी, बॉम्बे हिंदी में ये, मुंबई हिंदी में ये लैंग्वेज आता नहीं. कोई शिवसेना से है क्या? मेरी फटती है. Because for whatever reason I have still not. शिवसेना. देखो ऑनेस्टली मेरे को बॉम्बे को मुंबई बुलाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट बचपन पहले 20-25 साल निकले तब मुंबई बॉम्बे था. मैं ओजी बॉम्बे से, इसलिए मैं बॉम्बे बोलता हूँ. बिकॉज आई हैव नॉट रैप्ड अराउंड माई हेड इन कॉलिंग इट मुंबई. इट्स लवली मुंबई. 3 cheers for Mumbai. Amchi Mumbai. Vada pav. Everything else, dude. Yeah, pav bhaji. But anyway, like I was saying, like sharab, race. वैसे the next person who's coming on stage, can we start clapping for him? First name सही से नहीं आया मुझे, but उनका सरनेम है रईस. उज़ैर रईस, right? उज़ैर रईस. जी बढ़िया. Can we clap? Can we clap louder for him? Can we start? तो पहले बात तो भाई का बहुत बढ़िया. फर्स्ट टाइम बहुत मस्त पढ़े. मेरे को तो याद भी नहीं फर्स्ट टाइम कैसा क्या पढ़ा था मैंने. तो स्टार्ट करते हैं. ये जो आसमान है ये भी गज़लें कहता उज़ैर.
ये जो आसमान है ये भी गज़लें कहता उज़ैर, एक सिर्फ तू ही नहीं जो दर्द सहता उज़ैर, एक सिर्फ तू ही नहीं जो दर्द सहता उज़ैर, तेरा पेशा मछुआरा है भूल मत, तेरा पेशा मछुआरा है भूल मत, और तू मछलियों से दिल लगा बैठा उज़ैर, और तू मछलियों से दिल लगा बैठा उज़ैर, तेरा असल मुकाम उसका दिल है दिल, तेरा असल मुकाम उसका दिल है दिल, और तू किश्तों के मकान में रहता उज़ैर, और तू किश्तों के मकान में रहता उज़ैर, तेरी अम्मी ने की है रिश्ते की बात हूरों से, तेरी अम्मी ने की है रिश्ते की बात हूरों से, तू फिर क्यों इन तितलियों के नखरे सहता उज़ैर, तू फिर क्यों इन तितलियों के नखरे सहता उज़ैर। और चंद ख्याल, तेरे मुकाबले मेरा जो गम है कम है, तेरे मुकाबले मेरा जो गम है कम है, क्या कहा उसके 3-4 सनम हैं कम है, क्या कहा उसके 3-4 सनम हैं कम है, हम तो जन्नत तक तेरे साथ है, हम तो जन्नत तक तेरे साथ है, ये जो 6-7 जन्म हैं कम है, ये जो 6-7 जन्म हैं कम है, हम माँ बाप बीवी बच्चे सब लुट गए तेरी उल्फत में, माँ बाप बीवी बच्चे सब लुट गए तेरी उल्फत में, तू कर ले मुझ पे अब कितने भी करम है कम है, तू कर ले अब मुझ पे कितने भी करम है कम है। और चंद ख्याल, हमने तो हम तो है कई सालों से इन हिजर की सीढ़ियों पर, हम तो है कई सालों से इन हिजर की सीढ़ियों पर, और तू परेशान है ये चंद दिनों की दूरियों पर, और तू परेशान है ये चंद दिनों की दूरियों पर, तेरी बेवफाई नीलाम होती है महलों में शहरों में, तेरी बेवफाई नीलाम होती है महलों में शहरों में, मेरी वफ़ा बिक रही है बाज़ारों में रेडियो पर, मेरी वफ़ा बिक रही है बाज़ारों में रेडियो पर, जो ढूंढ रहा है मोहब्बत तू इस काली सी दुनिया में, जो ढूंढ रहा है मोहब्बत तू इस काली सी दुनिया में, घुमा नज़र तरफ मेरे मैं खड़ा हूँ अपनी एड़ियों पर, घुमा नज़र तरफ मेरे मैं खड़ा हूँ अपनी एड़ियों पर, मिलने आई है आखिरी बार, ध्यान देना इस शेर पे, मिलने आई है आखिरी बार अब वो शादी के जोड़े में, मिलने आई है आखिरी बार अब वो शादी के जोड़े में, मेरा माथा उसके होठों पर मेरे आंसू उसकी चूड़ियों पर, मेरा माथा उसके होठों पर मेरे आंसू उसकी चूड़ियों पर। और आखिरी ख्याल, तेरी आंखें उर्दू हम ज़बर ज़ेर याद करते हैं, ज़बर ज़ेर इज़ अ नुक्ता होता है, तेरी आंखें उर्दू हम ज़बर ज़ेर याद करते हैं, कभी भूलते नहीं भले देर सवेर याद करते हैं, एक तू है जिसे मैं याद तक नहीं, एक तू है जिसे मैं याद तक नहीं, एक लोग है जो मेरे हर शेर याद करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Damn, dude, you look also rice. Nice. If you come in a coat suit, everyone will just be like rice. I think बीच में जब आप लास्ट 2 लाइन पढ़ रहे थे तभी जस्ट स्पेसिफिकली मेरे लिए ही वॉज लाइक ज़बर ज़हर इज़ अ नुक्ता। थैंक्स। हाँ, मैंने थोड़ा पर्शियन सीखा था, चालू किया था, बट फिर डिडंट कैरी थ्रू बिकॉज life happened. That's the most millennial answer you can give for everything that doesn't work out. Life happened to me. Anyway, amazing. Can we hear it again for him? Nice. Crazy हो यार, मतलब I have to acknowledge this fact that आज की audience बहुत पाप है, मतलब आप perform बढ़िया कर ही रहे हो सब लोग, but the amount of spirit you guys have and you've come with is amazing. Can we hear it for you guys once? Can you clap for yourselves? Because I inherently believe that an artist is as good as his audience is. I mean, of course, there are those people who can just perform to a wall also, but then everyone's not Jim Carrey. So
Yeah, and that's that. Can we have the next artist? Are we ready? Yeah. Can we start clapping? Can we clap for Rahi? आइए. Keep clapping. हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया. भाई ने सही पर सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं. मैं भी फाइनली बहुत टाइम मतलब काफ़ी दिन से यस लिखा था, कमेंट किया था कि कभी परफॉर्मेंस का चांस मिलेगा नहीं मिलेगा. मतलब मैं इतना डेस्परेट था परफॉर्म करने के चक्कर में, बीच में तोड़फोड़ की वीडियो आई थी, मैंने उसके कमेंट में यस लिख दिया था. तो मुझे मैसेज DM आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, आओ आपको भी तोड़ेंगे. नहीं पर मेरा एक्चुअली स्लॉट जो था वो लास्ट मंडे का था. बट मैं रिक्वेस्ट किया कि मैं रहता वापी गुजरात में हूँ, तो बोला सर मैं नहीं आ पाऊँगा ड्यू टू सम, मेरे कलीग ने छुट्टी मार दी, मुझे लीव नहीं मिल पाएगा. तो इनका मतलब था अच्छा कि इन्होंने मुझे ठीक है आप नेक्स्ट संडे आ जाइए, कोई बात नहीं, अभी अंडरस्टैंड. तो इनके लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए हैबिटेट के लिए कि उन्होंने मुझे चांस दिया फिर से. वो अलग बात है, रात में 1 बजे कंफर्म किया भाई ने कि आप सुबह आ सकते हैं सर. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं खींचूँगा, सीधा अपनी एक नज़्म लिखी है. मतलब मैं नज़्म नहीं बोलता इसको कि ये कोई पोइट्री नज़्म या गज़ल कुछ नहीं है. ये एक चिट्ठी है जो एक सोल्जर ने अपने आखिरी वक्त में लिखी है. किसके लिए लिखी है, क्या लिखी है, आप लोगों को पढ़ूंगा आप समझ जाएंगे. जिसका उन्वान, इसका टाइटल का नाम ही है, इसका टाइटल ही चिट्ठी है. मैं स्टार्ट करता हूँ. राहें तक तक बेटे के इंतज़ार में एक माँ की आंखें थक आई. राहें तक तक बेटे के इंतज़ार में एक माँ की आंखें थक आई. बेटा तो घर नहीं आया पर उसके नाम की चिट्ठी घर आई. चिट्ठी के पहले हिस्से पे लिखा था मैं जल्द लौट कर आऊँगा. इस बार तिरंगे से लिपट कर मैं घर की शान बढ़ाऊँगा. पर मेरे आने पर आंसुओं से इस तिरंगे की शान कम मत करना. तुम्हें देख मैं भी रो दूँगा माँ, इसलिए अपनी आंखें नम मत करना. और वो भी तो मेरी माँ है, और वो भी तो मेरी माँ है, मुझे प्यार से गोदी में सुलाएगी. चिंता मत करो माँ, नींद ना आने पे धरती माँ भी मुझे लोरी सुनाएगी. और जितना मैं उनका हूँ, जितना मैं तुम्हारा हूँ, उतना ही मैं उनका भी बेटा हूँ. बस तुम इतना समझ लेना, मैं तुम्हारी परछाई में ही कहीं लेटा हूँ. चिट्ठी का दूसरा हिस्सा पढ़ के पिता के मजबूत कंधे झुकने लगे. बरसों से थमे आंसुओं के बांध उस चिट्ठी को पढ़कर टूटने लगे. उन कंधों को संभालते हुए फिर बेटे ने कहा, ये कंधे इतने कमज़ोर नहीं हो सकते. हिम्मत करना आप ही से तो सीखा है, अब आप ऐसे नहीं रो सकते. और इन्हीं कंधों पर तो घूम के मैंने दुनिया देखी थी. माँ के चरणों में जन्नत है, ये बात आप ही से तो सीखी थी. बस एक आखिरी बार मुझे इन कंधों पर घुमा देना. झूठी ही सही पर मुस्कुरा के अलविदा कहना. चिट्ठी के अगले हिस्से में वो मासूम बचपन लौट के आया. लड़ने झगड़ने वाले दोस्तों को भी यार चिट्ठी ने खूब रुलाया. उनके आंसुओं को पूछते हुए एक दोस्त ने कहा, तुम सब क्यों ऐसे रोते हो, ये अपना वही छुपन छुपाई वाला खेल है. हाँ बस इस बार थोड़ा सा नियमों का हेर फेर है. इस बार इस खेल में हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे. मैं रोज़ सपनों में आऊँगा, हम वहीं पे थप्पा बोलेंगे. यारो हंसकर अपना लो इस नियम को, अब से ये हम सबका नसीब है. चिट्ठी की जब आखिरी हिस्से में जब प्रीतम की बारी आई, उन्होंने पढ़ने से इनकार कर दिया. भीतर जाकर अपना सिंदूर मिटाया और बेटे के हाथ तिरंगा रख दिया. बेटे के हाथ वो तिरंगा रख मुस्कुरा कर बोली, बचा हुआ कर्ज चुकाने की अब तुम्हारी बारी है. अब आगे की तुम पर जिम्मेदारी है. हो नाज सभी को तुम पर बेटा, तुम भारत के ऐसे वीर बनना. माँ की रक्षा करने वाले तुम अगले शमशीर बनना. उनकी ये बातें सुन सभी हैरान थे. बोला ज़रूर उन्होंने था, पर ये उस चिट्ठी के आखिरी अल्फाज थे. ये उस चिट्ठी के आखिरी अल्फाज थे. थैंक यू एवरीवन. थोड़ा सा माहौल हो गया है तो लाइट करके जाऊँगा इसको. आधा 1 मिनट बचा है मेरे पास. तो रिसेंटली फादर्स डे गया था. मतलब मैं बहुत ही सरप्राइज था. मेरी आंखों ने जो देखा है लास्ट वीक, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है. लड़के फादर्स डे पे पोइट्री कर रहे थे. मतलब एज एन इंडियन मुझे लगता है ये एक्सेप्टेबल नहीं सोसाइटी में, क्योंकि मुझे ऐसा था बाप बेटे का रिलेशन होता है ना, वो एम्प्लॉय और HR की तरह होता है. सिर्फ 2 टॉपिक की बात करनी है हमको. किस पे? या तो पैसे, या तो परमिशन के लिए. क्योंकि ये सब जो है ना, मतलब मैं लास्ट टाइम मतलब मैंने मेरे पापा को लव यू पापा बोले चेक करो कहीं ये जो माल फूक के तो नहीं आए हैं. तो ऐसी हालत होती है हमारे यहाँ पे, ऐसा कल्चर है हमारे पे. बट एक स्टोरी है, मतलब ये फादर जो लड़कियाँ बहुत सेलिब्रेट करती हैं, उसका रीज़न मैं आपको एक मेरा छोटा सा किस्सा मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में. टाइम हो गया. थैंक यू एवरीवन. Can we clap again for his spirit? He's here from Gujarat, Vapi. Isn't that so good? But I came from Thane, guys. Okay, can we hear the next artist? Are we ready? Yes.
Can we start clapping for Smita? Keep clapping, keep clapping. Yeah. Am I audible? Yes. Yeah. Hello. First of all, thanks to Habitat for calling me, coming here after a long time. This is my favorite stage. And Krishna, a lovely story, enjoying it a lot. दो कविताएं लाई हूँ, दोनों ही जिंदगी पर है. पहली का शीर्षक ही है जिंदगी. क्या चाहिए भला इस जिंदगी को, क्या चाहिए भला इस जिंदगी को, ये कौन सी है लगी दौड़. सब हैं परेशान, पता नहीं किस बात की है ऐसी होर. जो मिल गया वो हमेशा कम है, जो मिल गया वो हमेशा कम है, जो ना मिला उसका हरदम गम है. ये मन भी तो आजकल हर बात पे तर्क करता है, क्या सही है क्या गलत है, हर बात पे विमर्श करता है. क्या ज़रूरी है ज़िंदगी में इतनी गंभीरता, बताइए क्या ज़रूरी है ज़िंदगी में इतनी गंभीरता. फिर क्यों तो हर रोज़ नई परेशानी है ढूंढता. तो जनरली ऐसा होता है लाइफ में, सब कुछ स्मूथ जा रहा है तो वी नीड ड्रामा. तो उसके ऊपर ही था. हाँ माना कि है बहुत जिम्मेदारियाँ निभानी, पर ये ज़िंदगी भी तो एक ही है ना तुम्हारी. थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा ठहर जा, रंगों को ढूंढ खुशियों को जी ले, जुगनू पकड़ फूलों से मिल, खूब मुस्कुरा और जी भर के खिलखिला. एक बार फिर से अपना बचपन तू जी ले, हक है तेरा तू भी खुश हो दे. एक और है. ये भी अगेन ऑन लाइफ ओनली. कभी कभी ऐसा लगता है ये जीवन का अर्थ है क्या, कभी कभी ऐसा लगता है ये जीवन का अर्थ है क्या. भला किसी का कर न सके तो ये जीवन व्यर्थ है ना. मानव जीवन पाया है तो विशेष तो बनना होगा, और अगर बनने की कोशिश भी ना की तो मानव कहलाने का हक होना होगा. तुमसे तो अच्छे फिर वो पक्षी हैं ना आसमान के, कलरव करते मधुर धुन गाते, प्रकृति को सुंदर बनाते. तुमसे तो अच्छे फिर वो पक्षी हैं ना आसमान के, कलरव करते मधुर धुन गाते, प्रकृति को सुंदर बनाते. नन्ही सी वो तितली भी जो फूलों पर मंडराती, रंग बिखेर अपने तन से खुशियाँ तो फैलाती. या फिर वो बारिश की बूंद जो प्यार ही प्यार लुटाती, जात पात और धर्म का वो भेद कहाँ कर पाती. फिर भी मेरी बात सुनो, ना ही पक्षी ना ही तितली, ना बारिश की बूंद बनो. तुम में इतनी क्षमता है कि तुम उम्दा इंसान बनो. शायद जीवन का फिर तुमको उद्देश्य सही मिल जाए, मानव बनकर मानवता का पाठ समझ आ जाए. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. It wouldn't have hurt if you guys would have kept clapping till I came up. But anyway, no, I'm kidding. What a lovely performance, sir. Can we hear it again for her? So nice. It's nice. I like the fact that a poet is coming up on stage and saying that life is not so serious. You can just chill. Which we poets normally never do because हमको चाहिए कलेश. How many people here who like कलेश? हाँ तो हाँ बोलो ना, हाथ उठाओ जिसको कलेश पसंद है. मैं किधर बोल रहा हूँ, अरे ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ. Listen, we've all grown up seeing Komalika at some stage. Like I am from those set of people who's like किधर gossip है, मैं उधर है. Gossip के भी पहले. Like it's turned. I mean, I think now the good part about all this woke behavior is that men can just be openly gossip kings. Because men gossip a lot. It's amazing. I mean, I like it. I love it. Like when there are even relative aunties who are gossiping and they're so engrossed in gossiping, it's a lot of fun.
Anyway, has got no real information here. But okay, can we start clapping for the next person? Yeah, can we clap for Ramesh? Keep clapping, keep clapping. Let the energy not dip. Yeah. Wow, so nice. Yeah, perfect. So ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करता हूँ. इंग्लिश और हिंदी की बात हो रही है तो एक दो लाइन है मेरी कि महक से फिजाओं में अमृत घोल देते हैं. महक से फिजाओं में अमृत घोल देते हैं. अभी चंद लोग बचे हैं जो बड़े शौक से हिंदी बोल लेते हैं. सो गाइस, दिस इज फॉर योर क्लैप फॉर योर. Thank you. So I am Ramesh. People often call me Poet Ramesh. I come from Begusaraय, Bihar, the land of राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर. तो उनकी चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी छोटी सी गज़ल प्रस्तुत करता हूँ. सुनिएगा कि ये जो तेरी तलब है तो फिर यहाँ हूँ मैं. ये जो तेरी तलब है तो फिर यहाँ हूँ मैं. जो तू नहीं है सामने तो फिर कहाँ हूँ मैं. जो तू नहीं है सामने. शुक्रिया. कि ये जो तेरी तलब है तो फिर यहाँ हूँ मैं. जो तू नहीं है सामने तो फिर कहाँ हूँ मैं. मेरी धड़कनों की गीत तुम, मेरी संगीत तुम, मेरे दिल में छुपी मनमीत तुम. ये जो है तेरी आहटें तो फिर यहाँ हूँ मैं. जो तू नहीं है सामने तो फिर कहाँ हूँ मैं. जैसे राधा बिन कान्हा अधूरा लगे, जैसे बदली बिन सावन यूँ जलती रहे. जैसे राधा बिन कान्हा अधूरा लगे, जैसे बदली बिन सावन यूँ जलती रहे. जैसे दीपक बिन बाती सिसकती रहे, जैसे मूर्ति बिन मंदिर भी अधूरा लगे. जैसे गुमसुम अवध हो श्री राम बिन, जैसे गुमसुम अवध हो श्री राम बिन. जैसे मूर्छित हो लक्ष्मण संजीवन के बिन. जैसे सूनी महल में उर्मिल यूँ तन्हा रहे, जैसे पत्थर बन अहिल्या तपस्या करे. जैसे पत्थर बिन अहिल्या तपस्या करे. जैसे सबड़ी सजाए फूलों से बन, जैसे सबड़ी सजाए फूलों से बन. राम दे के दरस कर दे पावन सतन. राम दे के दरस कर दे पावन सतन. जैसे स्वाति बिन पपीहा यूं तरपता रहे. पपीहा एक मछली की एक ये होती है जो स्वाति की बूंदों से ही वो प्यास मिटाती है, एक प्रकार की जीव है. जैसे स्वाति बिन पपीहा यूं तरपता रहे. जैसे शबनम बिन फूलों में खुशबू ना हो. जैसे सांसों में तेरे बिन ना हो जुस्तजू. जैसे पतवार के बिन नाव बहती नहीं, वैसे ही बिन तेरे मेरी सांसें यूं चलती नहीं. वैसे ही बिन तेरे मेरी सांसें यूं चलती नहीं. ये जो तेरी चाहतों की तलब है तो फिर यहाँ हूँ मैं. जो तू नहीं है सामने तो फिर कहाँ हूँ मैं. एक छोटी सी और गज़ल है, सुनिएगा कि ख्वाब आँखों से बरसे जो बन के गज़ल. ख्वाब आँखों से बरसे जो बन के गज़ल. नाम तेरा मैं लेके सवर जाऊँगा. और तुझसे मिलकर यूँ पावन हुआ मेरा तन. मैं अहिल्या सी मानिंद तर जाऊँगा. मैं अहिल्या सी मानिंद तर जाऊँगा. तेरी चाहत में डूबा हूँ राधा सा मैं. तेरी चाहत में डूबा हूँ राधा सा मैं. बांसुरी बन तेरे लबों पे ठहर जाऊँगा. और तेरी अधरों पे लिख दूँ मैं कोई गज़ल. तेरी अधरों पे लिख दूँ मैं कोई गज़ल. उस गज़ल को हर मंच से यूँ दोहराऊँगा. ख्वाब आँखों से बरसे जो बन के गज़ल. नाम तेरा मैं लेके समर जाऊँगा. ढूंढता फिरूं मैं तुमको क्यों जहां में दरबदर. ढूंढता फिरूं मैं तुमको क्यों जहां में दरबदर. सिर्फ तुमको ही पाऊंगा मैं जिधर जाऊंगा. और देख ले मुझे तू मेरी नज़र से कभी. देख ले मुझे तू मेरी नज़र से कभी. बन के बादल दीवाना मैं बरस जाऊंगा. बन के बादल दीवाना मैं बरस जाऊंगा. ख्वाब आँखों से बरसे जो बन के गज़ल. नाम तेरा मैं लेके सवर जाऊंगा. थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल फॉर माय पीस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. What electric stage presence he had, no? Lovely performance, man. इतने चाव से पढ़ा. बहुत खूब यार, बहुत खूब. Can we hear it again for it? Wow, man, you guys are just killing it. Like killing it to next level. For everyone who said that it's the first time and all that or whatever number of time,
I think after a very long time, this is one open mic that I have come to, and I'm going back inspired and so happy looking at the way people are performing. It's a lot of fun. Clap again for yourselves. Like literally all of you have brought something peculiar to the stage, and it is so beautiful to see so many people write and perform. Crazy. Okay. Can we call the last act? Yes. Second last. I'll do a small piece still. Great. Are we ready? Yes. Can we start clapping? Can we start clapping for Adnan? Yeah? Yeah. Clap, clap. Hello everyone. My name is Adnan Sheikh. मैं कर्नाटक स्टेट शेर है मैसूर से हूँ. मैं शायरी लिखता हूँ. तो मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ इधर, और मैं मुंबई में भी पहली बार आया हूँ. तो सबसे पहला शेर मुंबई के लिए सुनाना चाहूँगा, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो. इन इंग्लिश वी से मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स, बट इन हिंदी मुंबई यानी सपनों का शहर. यहाँ हर किसी को कामयाबी तो मिल जाती है, पर उससे पहले करनी पड़ती है मेहनत की सैर. मछली चाहे कितनी भी बड़ी हो या छोटी, तो उस तक उसका रिस्क पहुँचा देता है, चाहे उस समंदर में चल रही हो तूफ़ान सी लहर. आए मेरे रब, तूने इस दुनिया में करोड़ों बंदों को नवाजा है, अब मुझ पर भी फेर अपनी एक नज़र. इसी महीने में जो एयर इंडिया एयर क्रैश हुआ था, तो उस पर मैंने एक शेर लिखा था, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो सुनाना चाहूँगा. कोई अपनी कहानियाँ लेकर जा रहा था, तो कोई अपने सपने पूरे करने जा रहा था. कोई अपने प्यार से मिलने जा रहा था, तो कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था. किसे पता था कि ऐसा हादसा होगा, न जाने इसमें से कौन कौन अपनों से बिछड़ा होगा. जो इंसान आपके पास है आप उसकी कदर कर लो जनाब, क्योंकि जो इंसान आज आपके पास है न जाने कल वो कहाँ होगा. बहुत शुक्रिया. और मुझे ना एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, और वो भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, पर वो अभी मुझसे थोड़ा नाराज़ है, तो उसे मनाने के लिए एक शेर कहना चाहूँगा, अगर आप सबकी इजाज़त अर्ज़ करना चाहूँगा. हर चेहरे में सिर्फ तुझको ही देखता हूँ, सिर्फ तुझे देखने के लिए तेरी गली से दिन में 100 दफ़ा गुज़रता हूँ. हर चेहरे में सिर्फ तुझको ही देखता हूँ, सिर्फ तुझे देखने के लिए तेरी गली से दिन में 100 दफ़ा गुज़रता हूँ. तुझसे बात किए बिना मुझे नींद भी नहीं आती, और जब भी आँख लगती है सिर्फ तेरे ही ख्वाब देखता हूँ. मेरा यकीन कर मेरी जान, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ. और एक ऐसा ही एक प्यार भरा शेर सुनाना चाहूँगा, अगर आप सबकी इजाज़त है. तुझे देखे बिना मेरा दिन नहीं ढलता है, तुझे देखे बिना मेरा दिन नहीं ढलता है. तुझे देखकर मेरे इस दिल को बहुत सुकून मिलता है. और जब भी तू पंचवर के रात में अपने घर से बाहर निकलती है, और जब भी तू पंचवर के रात में अपने घर से बाहर निकलती है, सिर्फ मैं ही नहीं, उस आसमान के बादलों के पीछे छुप छुप कर वो चाँद भी तेरे पीछे पीछे चलता है. एक शेर माँ पर सुनाऊँ, माँ के लिए. इस दुनिया में चाहे तुम कितना भी बड़ा मकाम या कितना भी बड़ा नाम बना लो, फिर भी यह दुनिया तुमसे हैसियत ही पूछती है. इस दुनिया में चाहे तुम कितना भी बड़ा नाम या कितना भी बड़ा मुकाम बना लो, फिर भी यह दुनिया तुमसे हैसियत ही पूछती है. बस एक माँ होती है जो हमेशा खैरियत पूछती है. और एक आखिरी शेर माँ के ऊपर कहना चाहूँगा, फिर मेरा टाइम अप हो जाएगा. अगर आप सबकी अर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि माइक ऑफ होने से पहले शायर सुना दूंगा, इसलिए. बस उस रब पर भरोसा रखना मेरी अम्मी जान, बस उस रब पर भरोसा रखना मेरी अम्मी जान. इंशाअल्लाह एक दिन बनाऊंगा ऐसा मकाम, आप जिस चीज़ पर इशारा करोगी मैं वो हर चीज़ कर दूंगा आपके नाम. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया.
I like how he had a smile throughout the performance. So sweet, man. Can we clap again for it? Huh? Awesome. Did we have a good time? Yes. Yeah? Awesome. Shall I do one last piece and then we call it an evening? Yes. Crazy. How many people single in the house? Nice. Okay, great. I'll start with the piece. If I forget in between, I'll use my phone. Be gentle with me. When he said that, I was like, that's what she said. But then I'm a host, I'm a poet, I need to be poised. Anyway. On most days, we're two individuals busily fighting the world. We're fighting too hard to be ourselves, while everyone around us demands for their version of us. I don't want us to be these versions when we come around each other. I want us to be ourselves around each other and enjoy each other's presence. I want us to treasure the pleasure of being around each other and explore the ability of trying to love these versions of ourselves. I want to be the road you walk through at the end of the day after finishing all your work. I want to be the couch you throw yourself upon after reaching home at night. I want to be the phone lingering around your collarbone as you hold it between your ear and the shoulder. I want to be a listener of that sleepy voice which meekly yet reassuringly wishes a good night. I want to be the promise that the sun makes to the earth. I want to be the fragrance of the morning coffee awakening you and lingering around as you make peace with the day. I don't want to be a bird or a notification in the waiting. I want to be the wristwatch on your hand, which is rarely spoken about, but always an integral part of your mundane. I want to be with you as you are becoming and unbecoming all these versions of yourself, as I take the plunge of accommodating you in my life, bearing my scars open for exhibition and adulation. I want to build this home together with you, as the roof are thatched by our promises and the walls are adorned by our love. I want to decorate the living room with every showpiece that symbolizes our true selves. I want this house to look like every shade of who we are to ourselves. The afternoons will be spent leisurely reading each other, like enjoying a glass of wine peacefully. There'll be a bedroom with a bed pining for our unison, where we will make love and rest in the assurance that we are building our definition of a good life. Thank you. So that's been my time. My name is Krishna Iyer. You can find me on all the social media platforms. Krishna Iyer on Instagram. In case you have clicked amazing photos of me, you can upload it and tag me. Krishna Iyer _ that is the ID. I'm a storyteller, poet, writer. I have a few stories online. If you ever get a chance, have a look at it. And I do this show called Letters, wherein I perform real life letters that a lover wrote to another lover when she left him or when he walked out. So if you're around in the city and the next show is happening, I'd love you guys to be around because you guys seem like an amazing audience. And I'm so thankful to all of you for giving me this opportunity. Habitat, first of all, can we clap for Habitat? Crazy. Can we have a round of applause for yourselves because you've been so good? Before we leave,
please come on stage. We'll take a group photo and then we can call it an evening.